Thank you very much. First of all, a big round of applause to all of you that, whole day you have been here. And this reminds me, there is some famous song which says that party after party. So some of the people were asking after valedictory session, what kind of session we are going to have. तो ये party after party है, ठीक है? And कहते हैं कि best जो है last के लिए save होता है, ठीक है? तो hopefully today's session you will find in that spirit. And I'm very, very delighted that we have this important session which is about health, which concerns everybody. So if you remember, the last session was about education, and after that we are talking about health. Now when we talk about this, especially in the context of UP, in more than 24 years of my career, जब भी मैं किसी फोरम पे जाता हूँ, तो people talk about if you solve problem for India, the whole world can learn from it. And I say today, if you solve problem for UP, whole India can learn from it. Our state has all those challenges. Other states can learn from it if we solve here. Okay? हमारे साथ जो पैनल में जुड़े हुए हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, प्रोफेसर साहब, I would like to start with our secretary sir. Secretary sir, when we think about Uttar Pradesh and we think about its health system, आपके हिसाब से कौन से कंट्री हैं या फिर कौन से स्टेट्स हैं जो कि हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं? और उसके साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कौन से 2-3 प्रायोरिटी एरियाज हैं आपके हिसाब से, आप इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश को फोकस करना चाहिए? और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब इंजीनियरिंग में उन्होंने ट्रेनिंग ली है और वो ऑथर भी हैं बहुत सारे बुक्स के, तो मतलब एम्पैथी और सिस्टमिक थिंकिंग दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो हमें आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेंगे. तो ओवर टू यू सर. Thank you so much. Thank you Economic Times for inviting me. Thank you for your kind words. Before I answer your question, if you are talking about 1 trillion economy or a very large economic size and we are talking about inclusive growth, I think the first thing should start from our own action. So before you go to Delhi back or Hyderabad, Delhi back, you should buy a good chicken sari for your wife from Hazratganj. That will be the first step towards 1 trillion economy. And this goes for all the people here. Thank you very much, sir. That is actually inclusive growth, because those people who make the chicken sari would be a direct benefit who will be in the chalk area. So let us put our word where we mean it. Now coming to your question. Actually, somebody said, Hindustan एक साथ कई सदियों में जीता है. You cannot really find role model states. You will have to find out context-specific best practices and then model it and contextualize it for our own situation. और यूपी भी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तानी है. एक चीज़ जो लखनऊ के लिए है वो हो सकता है गोंडा के लिए ना हो. और so we have to look into examples and then contextualize it for our own state in our own situations. There are a number of best practices both within India as well as abroad in various areas, and we have to keep our eyes and ears open and learn from all of them. However, not cut paste them. We have to see what works for us. Regarding the focus areas that you spoke about, there are many areas actually, but one of the areas that I think have been a game changer in the last 4-5 years and should be is the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana. Because for the first time actually we started realizing or started advocating that government funding need not be government providing always. I'm not saying that government has no role in providing, but government funding need not necessarily be government providing always. So in Pradhan Mantri Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana is a kind of an insurance, public trust insurance scheme in which the beneficiaries, and that beneficiary size can increase if this program is successful. Beneficiaries can get treated for their IPD treatment in empaneled hospitals and government pays for it at a particular rate.
In fact, you'll be happy to know that this year, in the first 6 months, we have spent more than double of what we spent last year. So that we have 3,000 empaneled hospitals, private sector empaneled hospitals now in the state, and around 2 crore on the demand side people who have these Ayushman cards. So I think that is one area, how to leverage the private sector expertise using government funds. Probably if this is successful, then the package sizes may increase, and the health package which has just come out in October 2022 has many such packages which was not there earlier. So that is definitely one area in which we should work, how to make it easy for the private sector to operate in such a situation. But government will always have a role in health, especially in preventive health. So at the same time, when we are talking about Pradhan Mantri Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, we are talking about PPP for CHCs, community health centers, we will be coming out with a scheme very shortly of attracting private investors in difficult areas by giving them a viability gap. But having said that, government will always have a major role in health, especially in this kind of scenario. And preventive health and pandemic has shown that government will always have a role. So our focused areas definitely will be behavioral change, immunization, 100% immunization, 100% institutional delivery, better reproductive and child health facilities, a huge amount of emphasis on human resource, both in terms of recruitment, training, keeping them motivated. Because ultimately it is the person on the ground, and if we can keep them in place, ultimately what people say is it is DAD, doctors, ambulance, diagnostics, drugs. If we can manage this four, we can manage things. Another game changer is, I think, the Ayushman Bharat wellness centers. If we can crack this in the next 6 months, that is, all SEP centers has a community health officer, 12 more diagnostic services. We can ensure that they are there, they do telemedicine, and they do the drug indent from there. If we can do this much for 20,000 Ayushman Bharat well centers throughout the state, I think a lot would happen. So these are the focus points, as our Honorable Minister was saying, pick up some points, solve, get ahead. So I think these are the points for now. Thank you, Secretary Sir. As you mentioned, definitely the new thought process which has been there in governments of the day, that rather than just being provider, let's try to be payer as well, so that the private sector participation increases. Definitely this is going to be a significant approach change, and we have already started seeing the benefit of it. Moving on to Professor R.K. Singh. Professor R.K. Singh, first of all, we are aware that SGPGI has played a very, very important role during COVID. And I would like to, big round of applause for the entire SGPGI team who in Uttar Pradesh coordinated this, and they have been recognized by many people as well. Professor Sir, SGPGI is a very, very respected institute in Uttar Pradesh. What are some of the things you have taken from the patient experience perspective, new initiatives you have taken, which others can learn from, and maybe other institute can reach out to you so that those things can be taken forward? Thank you. Thank you, Economic Times, for the call, and feeling privileged to be speaking in front of the Honorable Minister and our Principal Secretary. मैं इसको पैंडेमिक के वक्त के बारे में बताऊंगा तो वहाँ से ज़्यादा सही लगेगा कि पीजीआई ने क्या किया, क्योंकि पैंडेमिक में जो पीजीआई ने किया वो शायद पूरी यूपी के किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उनकी गाइडेंस के बिना ये संभव नहीं होता। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो उन्होंने यूज़ किया वो है ईको, यानी एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम। इसको अगर मैं कम शब्दों में डिफाइन करूं तो इसी को बोलते हैं टेली हेल्थ। टेली हेल्थ में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेली मेडिसिन यानी क्लिनिकल, जिसमें डॉक्टर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एक होता है डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है, डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये सब टेली हेल्थ, यानी नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल को मिला देंगे तो ये बनता है टेली हेल्थ। कोविड में पीजीआई ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो ये टेली हेल्थ का रियलाइजेशन किया, और आपकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बिना टेली हेल्थ के गरम हथौड़े पे हिट किए हुए आप वो नहीं पहुंचेंगे।
आपको टेली हेल्थ यूटिलाइज करना है। आपके फार रीचिंग आउट स्पेसेस जहाँ पे डॉक्टर्स कभी पहुँचते नहीं, जहाँ डॉक्टर्स ट्रेंड कभी होंगे नहीं, आने वाले कितने ही दशकों में मैं बोल रहा हूँ, टेली हेल्थ ये बैरियर्स को क्रॉस करेगा, बहुत आसानी से क्रॉस करेगा। ऐसी जगहों पे डॉक्टर्स का प्रेजेंस होना, एक्सपर्टीज़ का होना, ये टेली मेडिसिन और टेली हेल्थ के बिना संभव ही नहीं। आप कितना भी रूरल इंडिया को बेटर कर लेंगे, डॉक्टर्स का जो माइग्रेशन है वो अर्बन एरियाज़ में ही रहेगा। 30% की जनता के लिए 60% डॉक्टर्स, ये है रेशियो, और 60% जनता के लिए केवल 30% है डॉक्टर्स। तो आप उन 60% जनता के लिए डॉक्टर्स को पहुंचाएंगे कैसे? केवल टेली हेल्थ, और कोई उपाय ही नहीं है। चाहे आपकी ओपीडीज हो, चाहे आपकी हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, हर पीएचसी के साथ एक टेली रिसोर्स सेंटर को डेवलप करना, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एक टेली मेडिसिन के सेटअप को डेवलप करना, ये है बॉल चेंज या गेम चेंजर इसको करना है। अगर हमने ये किया, हमने कोविड में कम से कम 75,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को पीजीआई ने 52 मेडिकल कॉलेजेस पूरे उत्तर प्रदेश के कोविड को सिखाया। तब जब सब लोग डरे हुए थे, उनको कुछ नहीं मालूम था कि इसको मैनेज कैसे करना है। 75,000 कमरे में बैठे हुए, हम केवल अपने कमरों में बैठ के जब 75,000 को ट्रेन कर सकते हैं, अब ये कोविड टाइम नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिए आप कितने ज़्यादा संख्या बल को ऐसे ही ट्रेन कर सकते हैं। तो टेली हेल्थ के स्ट्रक्चर को हमें अपने मेडिकल करिकुलम में लाने की ज़रूरत है, टेली मेडिसिन को लाने की ज़रूरत है हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। तो आप टेली मेडिसिन सेंटर्स तो बना देंगे, लेकिन उनको चलाएगा कौन? उनमें काम कौन करेगा? उनके अंदर कैसे काम करना है? डॉक्टर को पेशेंट के साथ इंटरेक्शन तो आता है, ये बेड साइड मैनर नहीं सिखाना है, ये वेबसाइट मैनर सिखाना है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सेगमेंट। एंड क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, मैं टेली हेल्थ के ऊपर बहुत एम्फसाइज करूंगा। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि आप हेल्थ देखिए, आप इंडस्ट्री बना लीजिए, हेल्थ एक्चुअली मैन पावर बहुत ज़्यादा जनरेट करता है और ऑक्यूपाई करता है और जनरेट भी कर सकता है। तो अगर टेली हेल्थ का ऑक्यूपेशन आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत फास्ट होगी, स्किलिंग होगी, स्केलिंग होगी, ये सब सेगमेंट्स डॉक्टर्स के लिए ज़रूरत है। अभी आप रूरल इंडिया में जाइए, आप क्वैक्स के द्वारा देखे जा रहे हैं, हम कह रहे हैं इनको हटाइए, आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को टेली मेडिसिन के ज़रिए पे लिंक करिए और अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को जो 60% को कम मिल रही है उसको आप ऐसे दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बॉल चेंज जो पीजीआई ने किया, कोविड के दौरान ये किया। मैं केवल इसी के ऊपर अपनी बात कम करूँगा। टेली हेल्थ के बिना आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पा ही नहीं पाएंगे, मैं ये सीधा बोल रहा हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी द चेंज। थैंक यू प्रोफेसर सर। एंड मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ उत्तराखंड में। वैसे मेरी पढ़ाई यूपी बोर्ड से ही हुई है, 10वीं और 12वीं, तब तक यूपी और उत्तराखंड एक ही थे। मेरे गांव में सिर्फ 10 परिवार हैं और आज की डेट में भी उत्तराखंड में मेरे गांव के अलावा 58 और गांव हैं, उनके बीच में सिर्फ एक पीएचसी है। उस पीएचसी में भले ही सारा स्टाफ हो और उनका बहुत मन करे कि हम जनता की सेवा करें, तो भी वो हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेलीमेडिसिन वाली बात की आपने, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। टेलीमेडिसिन के अलावा जो हमारे पिछले पैनल में बैठे हुए थे सर, जिन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की, उसकी बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारा राज्य जो है वो उसकी इतनी संख्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे डिजीज़ प्रोफाइलिंग हो जाए, डिजीज़ बर्डन हो जाए, कुछ हम एडवांस एनालिटिक्स जैसे कुछ काम कर पाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्लान कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मैं। अब मैं सेक्रेटरी सर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज हमारा विषय है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि अभी तक एक हैशटैग OTD नहीं बना है। मुझे तो लग रहा था सुबह से अभी तक वो चल रहा होता था कि हैशटैग OTD। अपने इकोनॉमिक टाइम्स वाले मित्रों से आग्रह है कि उस पर भी चालू करें। सेक्रेटरी साहब, अगर हमको
ये $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, और जिसको मैं सिंपल शब्द में बोलूँ, स्वस्थ उत्तर प्रदेश से समृद्ध उत्तर प्रदेश, तो आपके हिसाब से हेल्थ केयर में किस तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है हमें, और अगर 2027 तक इस ड्रीम को रियलाइज़ करना है तो लगभग हर साल हमें कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और किस तरह के स्टेक होल्डर्स को आप इन्वाइट करना चाहोगे उत्तर प्रदेश में? Health's contribution to economy should not be looked into, in my opinion, from investment in health side. कि कितने hospital आए, कितने nurses आए, कितने ambulances आए, that are there and that they will contribute to GDP, no doubt. But the health's main contribution to GDP will be by increase in productivity of the people, by making them a better health being. Output is a combination of investment and productivity. So when we talk about health and education, that investment driver will be through increase in productivity of the population rather than the other way around. So I think that is how we should not confuse, in my opinion, that number of hospitals, number of ambulances multiplied by this, and this is the effect on output. The effect on output is by the increase in productivity by having a healthy society. From picking up from what Dr. Saab said, I think he is absolutely right. You cannot fight the battles of tomorrow with the weapons of yesterday. Today and in the years to come, we'll have other opportunities and other threats which we cannot even probably imagine. So what India is today is not the India of 20 years hence. There will be a significantly large urban population. There will be issues of climate change. There will be other pandemics. But also there will be opportunities of digital technology, opportunities which even today we cannot probably even think of. For example, what Dr. Saab is saying, telemedicine, telediagnostics is already a reality, but it will be a major reality in days to come. Why should the radiologist be in Gonda to do the radiology? It was, even 10 years, 5-7 years ago, that was the only thing. But now, probably, COVID was an opportunity, threat and an opportunity both. It opened our eyes for many of these possibilities which we were not doing. Who knew Zoom before COVID? Today everybody is Zooming. Yes. Similarly for telemedicine, telehealth, telediagnostics, even today, as he was saying, even today there was 21,775 teleconsultation through eSanjeevani. As of today, we had this 21,775 teleconsultations through the eSanjeevani portal. So what I mean to say is not it is a huge number, but it is on our radar and we are monitoring it every day. This is number, quality is of course an issue. But even today as I speak, the CMO Gorakhpur, Dr. Ashutosh Dubey, he himself was doing the through eSanjeevani teleconsultation today. So we do recognize it that this kind of technology is offering us a lot many opportunities. Why should medical legal cases and people should be going to the courts? They can give the evidence Online. Yeah. So I think we have to, why should 100% screening be done for diseases which have 3% onset? We should be doing artificial intelligence models to do better predictive thing for screening. So I think we have to look into the future, what opportunities we have, what opportunities technology is throwing up, to look into how we solve problems and not look after only what we are using today. I completely agree with both of you, and I mean you have rightly put, we cannot fight battles of tomorrow with weapons of yesterday, and everybody knows, because of the COVID, a lot of things actually got opportunity to be tested. A lot of time we were forced to look into those methods. I had unique experience of during this COVID time being in UK and being in India, and I could see that even where they have a very powerful NHS system, even then they shifted to teleconsultation mode, and you could not visit any NHS facility without first having that teleconsultation. So while
you know, our as a country, we have huge opportunities. Our numbers are so huge. E-Sanjeevani number, as sir was talking about, that is also opportunity for us to actually scale up, build those technologies which are appropriate, and perhaps, you know, we can serve not only our own population but across the country and, you know, across the world. So with those words, I would like to thank Economic Times for having this session, very, very important session, and for Swasth Uttar Pradesh and Samriddh Uttar Pradesh, we would like to conclude this session. Thank you very much.